Okay. So, good morning, students. Today we are going to study regarding the reproduction in organism. If the organisms are here, they have a lifespan. So, first of all, we should know what is life span. Lifespan is the period between the birth to natural death. It means death may occur at any time, but this is not considered as the lifespan. The natural death, suppose in human being, a natural lifespan approximately 100 years, right? This is the natural, but randomly the death may occur, it doesn't matter. So this is the lifespan, the duration between the birth to natural death. Different organisms has the different lifespan. As a mosquito has approximately 3 to 4 days, houseflies approximately 7 days, and so. Different organisms have different lifespan. As dog approx 10 years, horse approx 25 years, right? Overall, in a single species, the lifespan is nearly fixed, right? So next, how this lifespan, what they are doing during these lifespans. So the organisms are reproducing and producing the young ones like their own. So first of all, we should know regarding the reproduction. Reproduction. Reproduction is of two types. First of all, what is the reproduction? Biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself. Means अपने ही जैसे संतान पैदा करने की वृत्ति को क्या कहते हैं? Reproduction. There are two types of the reproduction. Number one, asexual reproduction, and second, sexual reproduction. In asexual reproduction, we need single parent. In asexual reproduction, we need single parent. In sexual reproduction, we need two parents. Okay? So, single parent, it means a single parent has the capacity to produce the young ones like their own. Okay? So, in the offsprings which are produced by the asexual reproduction are known as clones. The offspring produced by the asexual reproduction is known as clone. What are the clone? As everybody knows, it is just a copy of the another things. As we are doing the photocopy of any matter, कोई पेज का अगर हम फोटोकॉपी कराते हैं, exactly उसका रेप्लिका हमको मिलता है, right? It is biologically it is known as the clone. So, what is the definition of clone? Morphologically and genetically similar organisms are known as clone. Okay? Now, the asexual reproduction, basically
asexual reproduction are common in majority smaller organism like single cell organism. For example, amoeba, paramecium, euglena. Here, the asexual reproduction are carried by the binary fission. Binary fission. Okay, we have studied binary fission in class 10th. Now, the next here is the here maybe birds. What are the birds? Birds are the propagated part of the body is known as bird, right? And the buddings are present in yeast and hydra. So we may see here the difference between the binary fission and budding, right? What is the difference? Basically, in binary fission, the single cell is divided into two equal and a half cell. बाइनरी फिजन में दो एग्जैक्टली हाफ शेल हमको मिलती है और बडिंग में एक बॉडी से आउटग्रोथ निकलती है एंड दैट आउटग्रोथ इज नोन एज द बर्ड राइट सो इन यूनिसेलुलर yeast and in multicellular hydra it also propagated by the buddings. The next thing, zoospore. Zoospores, there are certain organisms which make a special type of the cells which are responsible for the cell division or for the reproduction, right? Basically they are known as the spores, right? But in algae these are motile. ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक just like this, right? That's why it is known as the zoospore. And by this method algae are reproduction. Algae are reproduction. Further, so single celled and then algae. After that, fungi. In fungi, there are different types of the different classes has different sexual or say asexual reproducing bodies like conidia. By conidia, fungi reproduces by conidia, for example, penicillium, right? And then gammules. Gammules, these are the special type of the structure which have the gamma cups by which it can reproduce, and these gammules helps in the asexual reproduction in fungi. ये जो gammules हैं ये fungi के reproductive bodies हैं. The next thing, asexual reproduction. We have studied in single cell organism like amoeba, paramecium, then in algae, then in fungi, right? Now, if we are thinking regarding the plants, so the similar things we are saying them vegetative reproduction. Okay, so in animals we are saying
the asexual reproduction, but in plants, asexual reproduction is unambiguously known as vegetative reproduction, राइट जिस तरह से एनिमल्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में उसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन व्हाई इट इज एनिमल्स के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज बन रही हैं एक्सेप्ट द सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है प्लांट्स का कोई एक वेजिटेटिव पार्ट ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज वी नोज इन प्लांट्स रूट स्टेम लीफ they all are the vegetative parts and generative part is seed or flower that is the reproductive part right so if the plants are propagating by their stems by their roots or by their leaves so this kind of reproduction is known as the vegetative reproduction further there are certain questions क्या हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे क्या उन्हें क्लोन्स कहेंगे यस द ऑफस्प्रिंग produced by the vegetative reproduction is known as clone there are certain some vegetative propagules so many times we have seen if we have the potatoes in dark place after some times or some days we are seeing the sproutings are start raising from the potato से sprouts निकलना शुरू करते हैं and that are potato is known as the tuber right so in potato the vegetative propagation is carried by the eyes of potato right like onion so onion is known as the bulb okay we are directly a small bud of the onion is putting down the earth and the new onion will find so अगर प्याज के केस में है या गर्ली केस में इसमें क्या करते हैं हम लोग जो बल्ब है उनको करते हैं तो बल्ब of onion right next as we know leaf buds of bryophyllum offset of whiter hyacinth you have a listen somewhere terror of bengal this plant is known as the water hyacinth actually what happened this plant is carried out from the america ये इस प्लांट को अमेरिका से लाया गया था रीजन बिहाइंड इट इसका फ्लावर बहुत अच्छा लगता था देखने में लीव्स बहुत सुंदर सी थी तो एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसको लेकर के आया गया बट ये और थी द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज मच हायर देन द अदर्स इसका जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो बहुत ज्यादा था तो इसको किया क्या गया अगर कोई ऐसी वाटर बॉडीज हैं जिससे हमें वाटर विदस्टैंड करना है सो एट दैट प्लेसेस वी आर यूजिंग द वाटर हाइसिंथ राइट वाटर हाइसिंथ को जैसे ही वहां पर हमने डाल दिया जितना भी वाटर बॉडीज का वाटर है इट विल बी एवापोरेट आउट और ट्रांसपायरेट आउट ये ट्रांसपिरेशन होकर के निकल जाएगा वहां पर सिर्फ मोड्स बचेगा आप इसके बाद में वाटर हाइसिंथ का प्लांट भी सूख जाएगा जैसे ही नेक्स्ट रेनी सीजन आएगा नेक्स्ट रेनी सीजन में
Again, these water hyacinth becomes grown up. From where? Actually, what happens? जो वाटर हाइसिन के ऑफसेट्स है, ये ऑफसेट्स कुछ मड के नीचे पड़े रहते हैं सेडिमेंट कंडीशन में, राइट? तो जैसे ही ऑफ सीजन है या ऐसा उसके लिए फेवरेबल सीजन नहीं है, अनफेवरेबल सीजन है, ऐसे कंडीशन में तो ऑफसेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है? और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन है, मींस द रेन स्टार्ट्स, इट फाइंड द मॉइस्चर्स, start developing and again propagate into the form of water hyacinth, right? So the offset of water hyacinth, offset of water hyacinth. Next, suckers. What are the suckers? Basically, there are certain things. कुछ plants ऐसे हैं, suppose this is earth surface, okay, and any plants is grown here, okay. Now, if some part is just creeping on the earth and then bent inside the earth, again start growing, this is known as the runner. क्या है? अगर अर्थ सरफेस पे ही वो रन कर रहा है, कहीं पर भी सॉइल में दबने पाया, वहां से एक न्यू प्लांट को ओरिजिनेट करेगा, एंड दिस इज नोन एज द रनर. मेजॉरिटी ग्रासेस आर रिप्रोड्यूस्ड बाय दिस थिंग्स. ज्यादातर जो ग्रासेस हैं उस रनर के थ्रू रिप्रोड्यूस होंगी, राइट? देन द नेक्स्ट केस, suppose this is root, okay, and from this root a next body part is originated out and go and convert into a next plant. So this is known as the sucker, okay. For example, strawberry, in apple, they are growing by the suckers. So here are certain vegetative parts of the plants which are propagating new plants. Now we will study a sexual reproduction in detail. Now, sexual reproduction, okay. As we know that sexual reproduction needs two parents, because one parent generate male gamete and the next parent generate female gamete, okay. And now these male and female gametes fuse, make the zygote, and then new young ones, okay. So here is a short view of the sexual reproduction. We need two parents. One parent generate the male gamete, the male generate male gamete, female generate female gamete, and these both gamete fuse to make the zygote, which further convert into the new young ones. So this is the sexual reproduction.
And this sexual reproduction occurs in animals as well as in plants, right? Here we are studying regarding the plants. So basically, there are three stages in plants. Number one, we reproductive stage. Second, reproductive stage. And third, post reproductive stage. So basically, there are three stages. Number one, pre-reproductive stage. It is also known as the juvenile stage or juvenile phase or vegetative phase in plants. Okay. Now, in pre-reproductive phase, what happens? Number one, fooding, growth, and development. Only three things are what? Growth, development occurs in the pre-reproductive phase. Okay, then in the reproductive phase, the sex organs are developed in the reproductive phase and starts the reproduction. After a certain time, it lost the ability to reproduce, and that stage is known as post reproductive stage. Once again, pre reproductive, इस प्री रिप्रोडक्टिव में जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड खाना खाएगा, अपना ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा एक सर्टेन टाइम पीरियड तक. देन आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज, इस रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्टिव बॉडीज डेवलप हो जाएंगी और ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा. द थर्ड, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद में दे लॉस द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खो देते हैं और ऐसे स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, राइट. प्लांट के केस में पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज लगभग नेग्लिजिबल होती है बिकॉज ये प्लांट अपने टिल लाइफ तक रिप्रोडक्टिव फेज में रहता है मेजॉरिटी केसेस में, राइट. एनिमल के केस में ये क्लियरली डिस्टिंग्विश है. फर्दर, there are certain plants which produce flower once in their life, and majority plants they produce every year flowers. So on the production of the flowers, they are known as, there are two types of the plants. Monocarpic and polycarpic plants. In monocarpic plants,
once flower in its whole life, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फ्लावर देगा, इसके बाद इसका लाइफ खत्म। कई प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने फेवरेबल कंडीशन में आते हैं, फ्लावरिंग किया और इसके बाद में खत्म हुए। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं। अच्छा, एक और चीज हम देख सकते हैं, एज के भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्लांट्स हमारे दे आर एनुअल, biennial and perennial, राइट। एनुअल, एक साल में ये अपना फ्रूटिंग करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे, देन आफ्टर डेथ। बाइनियल, 2 साल में फ्लावरिंग फ्रूटिंग फ्लावरिंग करेंगे, देन आफ्टर पेरिनियल्स, साल दर साल, साल दर साल ऐसा करते रहते हैं। एनुअल प्लांट्स में बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हम जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं, मेजॉरिटी क्रॉप प्लांट्स हमारे एनुअल की कैटेगरी में आते हैं। बाइनियल कैटेगरी में ऐसे हैं जो 1 या 2 साल तक या कुछ साल तक रहते हैं, इसके बाद खत्म होते हैं। पेरिनियल पे मेजॉरिटी ट्रीज हमारे हैं जो कि हमेशा हमेशा बने रहते हैं। ऐसी कंडीशन में इनमें से ये दो हमारे मोनोकार्पिक या पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक कुछ तो ऐसे भी देखे जाते हैं जो जिनका लाइफ 12 ईयर्स, 25 ईयर्स और मोर देन दैट 100 ईयर्स तक है, लेकिन फ्लावरिंग सिर्फ एक बार ही करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बम्बूशा, बांस, ये लाइफ में एक बार फ्लावरिंग करता है, लगभग 12 साल में एक बार। एक है नीलाकरंजी, स्ट्रॉबिलस क्योंथियाना, नीलाकरंजी, ये 12 वर्ष में एक बार करता है फ्लावरिंग। और जो बम्बू है ये लगभग 50 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग करता है, 50 से 100 ईयर्स में। तो ये इतने, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या है, हमारे मोनोकॉर्पिक है। नेक्स्ट, पॉलीकॉर्पिक, जस्ट लाइक मैंगो या अदर प्लांट्स, बार बार फ्लावरिंग होगा, फ्रूटिंग होगा, फ्रूट शेड ऑफ होंगे, देन फिर फेवरेबल कंडीशन आएगा, फिर फ्लावरिंग होगा, फिर फ्रूटिंग होगा, एंड देन आफ्टर, so it continue till life. So they are the polycarpic plants. What about in animals? In higher animals, basically they have a certain time period, and that is known as the reproductive phase. So a cyclic changes occurs in the body which make them capable to reproduce once again. जितने भी ऐसे हैं हमारे पास में, इनमें एक रेगुलर साइकिल चलती है। जैसे देयर आर सर्टेन साइकिल्स, नंबर 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल और menstrual cycle. There is certain difference between it. Actually, what is the menstrual cycle? Certain animals has a very less vaginal path, right? So during the cycle, when the endometrium of uterus ruptures, जब यूटेरस की एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाती है, एट दैट मोमेंट ब्लड बिकम ooze आउट, ब्लड निकलना स्टार्ट होता है। क्योंकि कुछ एनिमल्स में जो वेजाइनल पाथ है वो बहुत छोटा है, सो दिस ब्लड ooze आउट फ्रॉम द वेजाइनल अपर्चर, एंड दिस इज व्हाई इट इज नोन एज द menstrual cycle, right? Certain animals has a long vaginal path
endometrium ruptures, and blood absorbed within that path, it will not ooze out. So these types of the animals are known as the oestrus animals, and this cycle is known as oestrus cycle. Right? Actually, what happens? There are certain, like the mammals, ape, they have the menstrual cycles. Human, they have the menstrual cycles, and cows, buffaloes, doggies, they have the Easter cycle. There may be these cycles are repeated in every month or in every year, right? There are certain animals which reproduce in particular season. किसी एक खास सीजन में ही इनका रिप्रोडक्शन होता है. हमने बहुत से एनिमल्स देखे हैं जब उनका पर्टिकुलर कोई, जैसे नाउअडेज इफ यू आर सीइंग दिस इज द समर, स्टार्टिंग ऑफ द समर, देन आफ्टर रेनी सीजन, राइट? रेनी सीजन में कौन ज्यादा बढ़ेंगे? इंसेक्ट्स, राइट? इंसेक्ट्स में फीड कौन करते हैं? रेप्टाइल्स. सो रेप्टाइल्स आर स्टार्टिंग नाउ. रेप्टाइल्स का रिप्रोडक्शन अभी स्टार्ट हो चुका है, राइट? ये फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर दिए, कॉपुलेशन स्टार्ट कर दिए. आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ दे विल लेज द एग्स. एग ले करने के बाद में, कुछ समय के बाद में उन एग से जो अदर रेप्टाइल्स लाइक द लिजर्ड्स, ये निकल आएंगे और ये इंसेक्ट्स को फीड करके अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे. सो लाइक दिस. तो कुछ क्या है जो पर्टिकुलर एक सीजन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड दे आर नोन एज द सीजनल ब्रीडर, राइट? वो एक खास सीजन में ही रिप्रोडक्शन करेंगे और उनको हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर. और कुछ तो ऐसे हैं जो इनका मंथली चलता रहता है. ह्यूमन बीइंग तो मंथली में है, इनका सीजन ये हमेशा कभी भी कोई सीजन होता है. सो देयर इज नो पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर इट. Here is one sentence given here. The end of a reproductive phase can be considered as one of the parameter of senescence or old age. So, in old age, what happens? Cell division, approximately cell division stops. Cell division से रुक जाते हैं, and other physiological events, they slow down. Reproduction already has been stopped, right? और कुछ समय के बाद में धीरे 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 करके ये सेनेसेंस होना या एजिंग होना स्टार्ट होता है. सो दिस इज द all about the asexual reproduction and sexual reproduction of organism. In next class, we will study regarding the pre-fertilization events, fertilization events, and post-fertilization events. Thank you. Mr. Sir? बस ये है कि कोई बस बढ़िया.